Well, like in MD or DMB, you can do critical care. Or Okay. many diploma, every diploma which is available medicine also, they are available for emergency medicine also. So you can go for it, and you have a very high opportunity for the emergency medicine abroad only, like abroad also, because abroad is a high value of medicine nowadays. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल ऑफ टू ब्रोक डॉक्टर्स। तो आज हम इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। इमरजेंसी मेडिसिन ब्रांच कैसी है, क्या कर सकते हैं हम इसमें, इन सब चीजों के साथ आज हम डॉक्टर जयंत के साथ बात करेंगे। सो हाय डॉक्टर जयंत, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड। ओके, तो डॉक्टर जयंत अपने बारे में कुछ बताइए ना, छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। Okay. Myself, Dr. Jain Makkar. I live in Alwar, Rajasthan. I did my MBBS from SSIMS NRC, Davangere, Karnataka, and I'm currently doing my PG in DNB Emergency Medicine from Dr. M. Kishan Medical College, Ahmedabad. ओके, परफेक्ट है। तो कैसा चल रहा है अभी पीजी लाइफ? हाउ इज द पीजी लाइफ? तो ये लाइफ तो सबको सेम ही होता है, खैर हेक्टिक होता है, स्ट्रेसफुल होता है। ये इमरजेंसी मेडिसिन एज अ ब्रांच कैसा है? मतलब हमने मेडिसिन के बारे में इतना सुना है, बिकॉज इमरजेंसी मेडिसिन इज करंटली इमर्जिंग ब्रांच, तो हाउ इज इट एज अ ब्रांच? you like सही सुना है, इट्स अ डायनामिक फ्यूचर ब्रांच एक्चुअली, बट इफ यू लाइक, इसका एक ही चीज है कि इफ यू लाइक थ्रिल, इफ यू लाइक एड्रेनल रश, देन दिस ब्रांच फॉर यू। ओके, Because इसके cons भी हैं, pros भी हैं, but I myself like this branch because in internship only I decide like to go for this branch. थोड़ा biased था मैं इस branch को लेके, तो that's why I choose this branch. तो ये आपकी फर्स्ट चॉइस थी ब्रांच? कह सकते हैं, can say that. ओके, सो इन व्हिच बैच यू आर करंटली, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? Just started my second year. Like first year is Okay. completed, started my Okay. second year, but still I'm waiting for my juniors, so out till Okay. now. जूनियर्स नहीं आ रहे, सबका प्रॉब्लम है अभी। Yeah. Okay. Same. So why this branch only? Did you do any research before this particular branch, or this was the best available option at your rank? What was the thing about this branch? Like, why did you choose this branch? I think branches like depend on person to person. So we have to find out for our like which branch suits you. Basically, so when I internship, I work as an intern in each branch. So when I came to like emergency medicine, like as I worked in South India, so emergency medicine very developed there, very good branch there. So I like the work how they do, like they deal with the critical patient. They stand between the death and the life of the patient. Yeah. So I like that I like that thing. That's why I decided to like choose this branch or to go for this branch because it's very like challenging. So you like the thrill about this branch, basically? Yeah, actually, you get the palpitation, you get the like sometimes you get numb, but that's a very beautiful thing about this branch. So what are your usual working hours? In my college, it's working hours are 12 hours. Like we have a 12-hour shift because we are like there are two seats in my college. Okay. So we are 2 person. So 12 hour we do duties. One has day shift, one has night shift. So 8 a.m. to 8 p.m. one will do, and the other will do night shift 8 p.m. to morning 8 a.m. Okay. So this will go like this for the 2 weeks. Then after 2 weeks, it will change. The other one will come to the morning, and morning person will go to the night shift. Okay. So that's how they do. So every day, if you are having a night shift, you are having a night shift only every day? Yeah, every day for 2 weeks. Okay, like, so there is no post duty of something like that? Nothing like that. Like we get the post duty of 12 hours. We do the 12 hours, then 12 hours rest. Okay. So like you are two people, like two people in one batch, right? Yeah, 2 people. Like there are 2 seats in this college, so 2 people in one batch. So your seniors and your super seniors also are two. Yeah, R2. In second year there are 2 people, and third year 2 people. So we are 6 now. Okay. So how is basically the work divided between all these 6 PGs? I think for emergency medicine, it is a teamwork only. So at one shift there will be 1 R1, 1 R2, 1 R3. Okay. And obviously consultant on call रहता है या फिर मॉर्निंग टाइम में अवेलेबल भी रहते हैं. So हम टीम वर्क की तरह काम करते हैं. जैसे some patient will come, so first R1 will deal with it. तो कोई प्रॉब्लम है, then R2 will come. Then if उनसे भी नहीं तो फिर R3 will come. So it's all teamwork. If you get the patient like 3 to 4 critical patient together, so all will do together. All residents will work together. Okay. That's how we work.
Okay. So what exactly we have to do as a postgraduate? Like what exactly is our work profile as a postgraduate in emergency medicine? As a postgraduate, we, like I told you, emergency medicine all about emergency. So we deal with emergency people. We deal actually with the OPD people also. Like sometimes acute abdominal pain will come. Sometimes Okay. stroke people will come. MI Okay. people will come. Okay. Or fever people will come. Get high fever, high grade fever are there. So they will come in night. That नहीं हो रहा है उनसे, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये सब. तो हर तरह के पेशेंट आते हैं. मतलब different people, different patients will come with a different presentation. So we have to diagnose what is going on. समटाइम्स क्या होता है कि स्ट्रोक पेशेंट आया, स्टार्टिंग में स्ट्रोक जैसा प्रेजेंटेशन लेके आएगा, लेटर ऑन फाइंड आउट दैट इट्स अ साइकेट्रिक पेशेंट. तो वो एक्चुअली बहुत डिफर करता है. फिर ऐसे ही एमआई का पेशेंट आता है, तो इट्स गो लाइक एमआई का पेशेंट आया, इंफीरियर कोल एमआई निकला उसको ईसीजी में, देन ही विल गो टू वीटी, पल्सलेस वीटी, देन गो टू सीपीआर, देन इंट्यूबेशन, देन पेशेंट को रिवाइव किया, स्टेबलाइज किया, देन आईसीयू शिफ्ट किया. देन ऐसे ही 2-3 घंटे एक पेशेंट में, क्रिटिकल पेशेंट अगर एक आ गया तो 2-3 घंटे यूं निकल जाते हैं, पता नहीं लगता. So if you deal with a 4 to 5 critical patient, तो your 12-hour shift लगेगा, 8 वाला लगा. So it will go like you have to be on your toes all the time. Okay. Yeah, as you are like dealing with the life and death situation. That's why. Okay. So I want to ask, मतलब आपने बोला कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है और हमेशा टोस पे रहना होता है, तो मतलब आप जो जनरल ओपीडी, जो हम मेडिसिन ओपीडी देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हम ये बोल सकते हैं कि इट्स अ फर्स्ट रेफरल यूनिट. मतलब अगर पेशेंट कैजुअलिटी में आ रहा है तो यू विल डील विद दैट पेशेंट बेसिकली. बेसिकली अगर ओपीडी से आवर्स हैं, तो अगर पेशेंट स्टेबल है तो वी कैन सेंड हिम टू ओपीडी डायरेक्टली. ओके, राइट. ठीक है. अगर ओपीडी टाइमिंग में पेशेंट ऐसा आया है which is critical and which cannot be managed in OPD, so obviously वो इमरजेंसी रूम में रहेगा, वहीं पे डील होगा उसका, वहीं पे उसको मैनेज किया जाएगा. और आफ्टर ओपीडी टाइमिंग लाइक आफ्टर 5, तो any patient will be deal in the emergency room only. Okay. So after coming to this branch, how are you feeling now? मतलब एक होता है ना हमारा ब्रांच का पर्सपेक्टिव, ब्रांच से आने से पहले, और क्योंकि इंटर्नशिप में हमारे पास काफी लिमिटेड मतलब व्यू रहता है, तो अब इस ब्रांच में आने के बाद में, एज रेजिडेंसी एग्जैक्टली करने के बाद में, हाउ इज इट लाइक? इट्स एक्चुअली बहुत ही अच्छा है. फीलिंग तो मतलब जैसा सोचा था, हम जैसा डील करते थे वैसा ही है इमरजेंसी. बट समटाइम काफी स्ट्रेसफुल होता है, काफी हेक्टिक होता है, अगर नाइट काफी हेक्टिक जाए तो, और समटाइम्स नॉर्मल भी रहता है. तो ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में जब आए थे, मतलब एज अ फर्स्ट ईयर रेजिडेंट, तो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट में आप क्रिटिकल पेशेंट को इतना पहली बार आप टच में आते हैं, तो you don't know what should we do, because patient minute में in a minute patient can collapse, right? So you will get the palpitation that time. But as you grow as a first year, like then you will become the second year now, so you will have experience to deal with the patients now. So we know what the patient, like the patient come with the symptoms, so what treatment should be given in a very short time, so the patient won't collapse. Okay. Regarding the procedures, like do you start doing procedures from your first year only, or like it takes time? We get the procedure from the first year only. We get every procedure, like we have already done every procedure in the first year only, but now the number has been increased now. In second year we'll do repeatedly. Okay. But in first year we used to give we used to have procedure like in a every week once or twice, but now we do like every twice, like every like one time every 2 days. Okay. That's a number will increase. What kind of procedures you usually do, like daily basis? Which we will do, like everything that emergency patient has to be done, like intubation will do, central line we have done, and that ICD we have put ICD डालना, और बाकी कैनुला ये सब तो फर्स्ट ईयर के काम होते हैं डालना, तो उसमें देख लेते हैं सब डालना. बाकी कौन सा ट्रीटमेंट मतलब किस तरह से देना है, तो एवरी वीक तो उस तरह से कौन सा इन्फ्यूजन किसमें बनाना है, तो वो सब सीखना. तो ये सब अभी. और प्रोसीजर में बाकी फर्स्ट ईयर वाले जो एंट्रेंस वाले प्रोसीजर होते हैं, वो तो टैपिंग वगैरह भी वी हैव डन ऑलरेडी. कूलर टैपिंग हो गया, एसआईटी टैपिंग हो गया, वो फर्स्ट ईयर में सब इंटर्नशिप में हो गया था, बट फर्स्ट ईयर में काफी बार हो गया है. ओके, वो सब. तो मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एज इसका कोई मेन ओपीडी पर्पस नहीं है, तो फ्यूचर स्कोप क्या है इस ब्रांच का? आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, खुद का कैसे, मतलब अगर आपको खुद का कुछ करना है तो हाउ कैन यू डू अबाउट दिस? पर्पस कैसे नहीं है, आई थिंक कि इमरजेंसी मेडिसिन मतलब इमरजेंसी जो है कैजुअलिटी, वो तो हर हॉस्पिटल में होना चाहिए, शुड बी देयर इन एवरी हॉस्पिटल, बिकॉज इट
seriously decrease the mortality rate of the patient. Yeah, right. Because अगर पेशेंट मतलब अगर एक पेशेंट है उसको 4 जने ऑर्थो मेडिसिन मतलब उसमें पॉलीट्रोमा है और 4 रेजिडेंट आर डीलिंग विद वन पेशेंट और अगर इमरजेंसी फिजिशियन है किसी में तो वो अकेला काम कर सकता है इन चारों का फॉर स्टेबलाइज द पेशेंट, देन वो रिस्पेक्टिव ब्रांच में दे सकता है उनको। तो सबसे बाकी फ्यूचर की बात करें तो या इसका एक कौन है कि you should have a team for this because this is a team work, you can't alone start the emergency medicine. But हाँ मैंने मतलब मेरे सीनियर्स को देखा है कईयों को like they do the diploma courses in like 1 year diploma courses diabetic हो गया या फिर rheumatology हो गया, they can start like they are doing the OPD also. Okay. Are there any super specialization thing currently in this branch? Yeah, there are supervision available. Like in MD or DMB, you can do the critical care. Okay. Many diploma, every diploma which is available for medicine also, they are available for emergency medicine also. So you can go for it, and you have a very high opportunity for the emergency medicine abroad only, like abroad also, because abroad is a high value of emergency medicine nowadays. Like you can do MRCM for the UK, you can do AMC for the Australia, you can do NZREX for New Zealand, and they are like high job salary and work-life balance. Okay. So what is basically the usual pay you get after passing MD DNB as you've seen your seniors? So what is basically the usual pay you get? I think it's 1,80,000 to 2,50,000. Like I've seen some like some are getting 1,80,000, 2 lakhs or 2.5 per month. But they are doing like this is the shifting branch, like so they do the shifts. So they can do other works also for you because other time you have no work, so you can do other thing also. You can prepare for the higher branch. You can do the OPD things. You can, if you have done the diploma course, you can do the OPD timings also. Because after becoming the consultant, you just have to come when the resident can't do them. Okay. Yeah. Right. Okay. So like why DNB? Like was it the thing available at your rank or you purposely chose DNB? And because there's so much stigma around DNB, so what would you suggest? Like you are in tier 1 city right now. Ahmedabad is a tier 1 city. So what would you prefer, tier 1 city, DNB or MD in a periphery for emergency medicine branch per se? Yeah, right. Stigma hai, I know. DNB or MD को लेके the person like everyone prefer MD only. But emergency medicine की एक बात है कि उसमें and it's very sad कि DNB जो है वो ज़्यादा available है MD से because it's a still emerging branch. So MD के option are very few. If mostly even मतलब mostly north side. MD के ऑप्शन इतने नहीं है लाइक MD को हमें मिलेंगे अच्छे तो लाइक एम्स दिल्ली हो गया या जोधपुर हो गया या फिर BGMC अहमदाबाद हो गया, तो दीज आर द गुड कॉलेज बट नॉट अदर वन, सो यू हैव टू गो फॉर DNB ओनली. साउथ साइड में देखेंगे तो साउथ ऑफ इंडिया में MD के ऑप्शन काफी बेटर है, DNB MD दोनों के, बट नॉर्थ में इतने नहीं है, तो इसलिए आई चूज द DNB नॉर्थ क्योंकि DNB का ऑप्शन यहाँ मतलब बेटर है मुझसे. Is it any different from MD? No, I don't think so. If you like मेरे को स्टिग्मा नहीं है लाइक MD एंड DNB का. You choose like you have to learn and you will learn. Okay. So what would you suggest somebody who will take emergency medicine branch कि उनको अगर MD पेरिफेरी में मिल रहा है, tier 2 tier 3 सिटी में मिल रहा है या DNB tier 3 सिटी में मिल रहा है, तो वो क्या चूज करे? Go for DNB. Because अभी MD पेरिफेरी में क्या अभी मतलब काफी टायर सिटीज में भी इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है, तो because there is मतलब अभी ये डेवलप हो रहा है, that's why I'm telling. Okay. So how much stipend do you get usually? In first year I used to get 84,000, but now it increased to 1 lakh. Okay, nice. So Gujarat has a stipend of 1 lakh. So like is it regular? Yeah, every month. Every month. So as it is a very hectic branch and we all have heard that Gujarat ki colleges are very toxic. So how much toxicity is there in the department? Branch is hectic, no doubt about it, but the college is not like non-toxic. So like obviously you have a 12-hour shift and you have to see the patient and you can't have a time to sit, and sometimes you can't have a time to sit. You have to stand in 12 hours. But the department and the college is non-toxic, not about it. So whenever you want leave, do you get leaves? How many leaves are there? Not that easily, but we get time to go home. That's it. Like per year, 2 times we go home and come. Are hostel facilities available for every year? Yes, for everywhere hostels are there and hostels are quite good, no doubt. Okay. So can you tell us the 2 pros and 2 cons of your branch?
I think already told you. First, like pros की बात करें तो first is कि 12 hour shift है, तो after 12 hours nobody will come and call you for and you can like live your life and you can sleep, you can have your time. And second is this thing only कि काफी emerging branch है आगे, it's not already like saturated नहीं है अभी बाकी branches की तरह, तो it will have like many job opportunity later. तो ये भी इसकी एक अच्छी बात है. बाकी कॉन्स की बात करें तो हाँ कॉन्स हैं, like every branch has. First we can say that is a teamwork. You can't like do alone everything. And the second is sometimes the developership alone will be very hectic. That I told you earlier. So these are the pros and cons. How is the academics in your department? Like how is it done usually? Academics होता कैसे है और आप लोग करते क्या हो academics मतलब क्या? Academics means we have a lecture, so like we have a lectures which is taken by a consultant like SR. Okay. So they gave the topic to every resident and we prepare the topic and we present the topic in front of everyone. So every person will read about it and will discuss about it topic. So day by day and by week we'll finish our topic and all thing. And they will also share the experience of their how they work and how they deal with the patient of emergency critical patients. How should we approach to the patients initially? Like how should we see the patient, because this is a very huge type of, we have to see every surgical thing, medicine thing, psychiatric thing, तो एक साथ सब देखना होता है. तो हमारे पर्सपेक्टिव पूरा ओपन होता है. Like in medicine only they approach like a medicine. सर्जरी वाले only सर्जरी की तरह अप्रोच करेंगे. तो इसी तरह हम लोग को बट ब्रॉड थोड़ा पर्सपेक्टिव रखना होता है, तो वो उस तरह डील करना सिखाते हैं. So how often your academic sessions are there? Like in a week, how many academic sessions are there? In a week, 2 to 3 times. 2 to 3 times. Okay. So how do you get time for academic sessions? Like you said that you have a 12-hour shift and it's an emergency medicine. So how do you get time? We have to, like after 12-hour shift, we get sleep, then we'll study also, we have food also, and everything we have to do. This is like residencies. Okay. Okay. So as you said that in MBBS, you were in South and now you are in Gujarat and you're originally from Rajasthan. So लैंग्वेज इश्यूज कितना रहा, कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस किया अभी गुजरात में या साउथ में, मतलब कैसा रहा? क्योंकि अभी गुजरात में भी गुजराती चलती है, तो फिर कैसे? हाँ, गुजरात में गुजराती चलती है. साउथ में मैं कर्नाटक में था तो कन्नड़ा चलती थी, बट आई लर्न कन्नड़ा फॉर देम एंड आई लर्निंग गुजराती फॉर देम. गुजराती इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट्स लाइक थोड़ा बहुत हिंदी जैसा ही, बट थोड़ा आदत हो गई तो 1 ईयर में ऐसे ही करना. बट हाँ, फिर डिफिकल्टी नहीं बोलेंगे इन्हें, इट्स अ चैलेंज एक्चुअली, बट इट्स गुड एक्चुअली. आप डिफरेंट लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग आल्सो, बट मजा आता है. कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो? नहीं. कर्नाटक में मैंने नहीं देखा कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो. वी ऑल लाइक लिव टुगेदर, साथ खाते थे, साथ पीते थे. और यहाँ पे भी गुजरात में भी सेम, वी हैव वी लिव टुगेदर, वी वर्क टुगेदर, दे ऑल आर नाइस, लाइक नो डिस्क्रिमिनेशन आई फेल्ट. Nice. So if you nice, very good. So if you have to choose the seat again in NEET PG, would you choose again same seat, or would you like some other seat? About the branch, yeah, I will choose the same branch again. But obviously, college will be always, we have a better option. So what do you think, according to you, what are the top 5 colleges for emergency medicine? So एक्चुअली मैंने बताया कि जैसे ये काफी डेवलप हो चुका है ऑलरेडी साउथ में, तो साउथ में काफी अच्छे कॉलेजेस हैं. लाइक केएमसी मणिपाल है, केरला और कर्नाटक के अच्छे कॉलेजेस हैं. केरला में लाइक जीएमसी है कोझीकोड में, और बैंगलोर में काफी है, सेंट जोन्स करके काफी अच्छे कॉलेजेस हैं बैंगलोर में भी. इन नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ साइड में एम्स हो गया, अपना एम्स दिल्ली हो गया, जोधपुर हो गया, देन बीजेएमसी अहमदाबाद हो गया. तो दे आर द गुड कॉलेजेस अवेलेबल. बाकी इमरजेंसी फिजिशियन की, मतलब इमरजेंसी मेडिसिन की ब्रांच काफी कॉलेज में आ रही है, बट आई वोंट सजेस्ट देम, क्योंकि अभी वो थोड़ा जैसे डेवलप होगा तो दे विल बी गेट बेटर. Okay. So last question, we'll not take much of your time. How would you rate your college and department? Like out of 10, how much would you like to give, and what advice, suggestion you will give to the upcoming NEET PG aspirants who want to take emergency medicine in future? Rating की बात करें तो if when I came to the first year, like I came when I was in first year, so I could have given 6 point, but now as like by year it is developing, so now I can give the 7 point. Okay. And for the suggestion, मैं ये बोलूँगा जिसको emergency medicine लेना है, जैसे पसंद है, like if you want thrill, if you want
palpitation, if you want to adrenaline rush in your body every day, then you go for it. To take this branch, and it's very emerging branch. So it's a very dynamic future branch. So don't think कि इसमें आपको job opportunity नहीं मिलेगा या आप बाद में कुछ नहीं कर सकते. It's not like that. You बहुत सारी job opportunity available है बाहर. अगर आप emergency physician होके जाओगे बाहर तो you can get. Okay. Thank you, Jayan. Thank you so much for coming and giving us insight about emergency medicine. Thank you. Yeah. Thank you.